Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. Hello everyone, myself Arpit Singh Deshmukh, and today I'll be representing my institute, Siddhivinayak Institute, which is in Gondia. So today I'll be teaching cross product, which is a part of vector. So let's start. Introduction to cross product. First of all, what is cross product? Cross product is an operation done on two vectors. For example, let us take two vectors. Here are two vectors, vector A and vector B. Here, in the cross product, we'll be doing operation on these two vectors. So, the operation we will be doing is we'll be doing cross product as our topic is cross product. So these are two vectors, and cross product, basically cross product of two vectors are equals to the magnitude of A vector into the magnitude of B vector into the sign between those two vectors. So for example, this is a vector A and this is our vector B. तो यहाँ पर जो दो वेक्टर है उनके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा. Theta is equals to angle between vector A and vector B. So here vector A into vector B will be using magnitude of A into magnitude of B into अरे ये क्यों शिट sine of angle between them, which is theta. Okay, so here basically cross product of two vector A, vector B is equals to magnitude of vector A, magnitude of vector B into the sine theta, which is where theta is equals to angle between those two vectors. So let's move on to the properties and stuff. Here we also need to find the direction between those two vectors. So अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा which is always perpendicular to these two vectors. जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का वो एक 3D प्लेन में होता है. सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A and vector B.
तो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता है वो एक 3D प्लेन में शो होता है। सो इनके बीच का जो एंगल होता है, जैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और वेक्टर ए, तो ये 90 डिग्री का होता है विच इज ऑर्थोगोनल। सो दिस शुड बी ऑल्सो 90 एंड दिस शुड बी ऑल्सो 90 एंड इन दोनों के बीच का भी 90। ओके, दिस इज द एंगल बिटवीन them. Let's is that stuff. इनकी की प्रॉपर्टी भी है, की प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज 4 into 2 which is equals to 2 into 4, but in vectors this doesn't works. In vector A into vector B is not equals to vector B into vector A. Okay, this is the property of vectors. We can't say that vector A into vector B is equals to vector B into vector A. For example, we can say that 4 into 2 is equals to 2 into 4, but for vectors that doesn't work. But the magnitude of vector A into vector B is equals to magnitude of vector B into vector A. So this is something important, you should remember it, and this as well. These were the properties of vector. Now we can move on to our next, which are cases of vector. Let's see. Important cases of cross product. For example, cases are like, what if one vector is like this and the other one is like this? What will be their cross product? And what if one vector is like this and another one like this with an angle theta between them? So we'll be discussing that now. Important cases of cross product. Case number 1. In case number 1, the theta which is the angle between the two vectors. The theta, which is the angle between two vectors, which we discussed earlier, is theta is greater than 0 and smaller than equal to 90, which means, for example, this is vector A and this is vector B. Here we know that the angle between them is theta. Okay, so this theta should be greater than 0 and smaller than 90, and it can also be 90. So here, if you may remember, vector A
Here, this is the general formula of cross product of two vectors. So here, this is the sine theta. And in this first case, where theta is greater than and smaller than 90, smaller than equal to 90, the cross product of these two vectors is always positive. This is always positive in the first case. Why? The reason is, you may remember the plane where in the first quadrant, which is 0 to 90, every trigonometric ratio is positive. So as the theta is between 0 and 90, the sine theta, the value of sine theta will always be positive, and these two are not dependent. The sign of the cross product is dependent on sine theta. That's why in the first case, where theta is between 0 degree to 90 degree, the value is always positive. Also, one more thing we can conclude with this is that the maximum value of cross product will be at sine 90, because the condition was that theta is smaller than 90 and equals to 90 or equals to 90. So the maximum value where sine 90, where theta is equals to 90. So the maximum value becomes this is the maximum value of cross product. Let's move on to the second case. Case 2. Okay. This is vector A. This is vector B. In case 2, we'll find the values of cross product when the vectors are either parallel or anti-parallel. तो जैसे अगर ये parallel है, which means in the same direction, both of the vectors are in the same direction. What will be the angle between them? उनके बीच का एंगल थीटा क्या होगा? उनके बीच का एंगल थीटा 0 होगा, because there is no angle between them. So that's why theta is equals to 0. And as theta is equals to 0, the cross product becomes sine 0, which is 0. This is the cross product of two parallel vectors in the same direction. And for the second part of this, where the vectors will be, for example, this is vector A, this is vector B. These are in opposite direction, and this case is called anti-parallel. Let me write it. Anti-parallel. And when the two vectors are anti-parallel, the theta between them becomes
180 degree. Theta becomes 180 degree. And as theta is 180 degree, sin 180 is also equals to 0. So therefore, this also becomes 0. This was the second case in which we discussed about what could be the value of cross product when the two vectors are either parallel or anti-parallel. So let's move on to the next part of this. Case 3 of cross product, where we'll be finding the cross product of unit vectors, which means unit vector. What does unit vector mean? For example, this is I cap, j cap, and k cap. These are two unit vectors. Okay. So for the trick to find the cross product of unit vector is the cycle trick. I call it the cycle trick. For example, this is I cap, this is j cap, and this is k cap. तो ये हमारे तीन यूनिट वेक्टर हो गए. एक क्लॉकवाइज साइकिल बन सकती है. इस साइकिल का यूज करके हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तीनों ही वेक्टर का. सो द फर्स्ट केस, आई वेक्टर इनटू j vector into k vectors into I vector. Let me write it again. Okay, these are first three cases. Here, very easily we can find the cross product of these unit vectors. For example, this is I and this is J. I, J. This is in clockwise direction. हम I से J तक एक clockwise direction में जा रहे हैं, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव K कैप. सॉरी, मैंने उसको वेक्टर बोला. दिस इज I कैप, दिस इज J कैप, दिस इज K कैप. सो I कैप इंटू J कैप इज इक्वल्स टू K कैप, एंड सिमिलरली J कैप इंटू K कैप. सो ये J कैप है, J कैप से हम K कैप एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर जो जाएगा पॉजिटिव I कैप. सो लेट्स राइट दैट पॉजिटिव I कैप. एंड फॉर दिस वन K कैप इंटू I कैप, दिस इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So positive J cap.
these are the first three cases where we are calculating all this stuff in a clockwise direction. Okay, so अब जो दूसरा केस है, so let me write the question. I cap okay, here we are not going in clockwise direction, जो तो थिंग्स जो है वो थोड़ी बदल जाती है. जैसे यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आई कैप से के कैप, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो हमारा जो आंसर होगा, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर जाते तो जे कैप आता, पॉजिटिव जे कैप. बट हम आई कैप से के कैप जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा नेगेटिव जे कैप. सिमिलरली इनमें भी हम वही अप्लाई करेंगे. जैसे के कैप है, के कैप से जे कैप गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस आई कैप. एंड फॉर द लास्ट वन, जे कैप से एंटी क्लॉकवाइज आई कैप, तो आंसर हो जाएगा नेगेटिव के कैप. This was the third case of our cross product and last case of cross product in the important cases. So let's move on to the next topic, which is our last, cross product in component form. For example, you have to find cross product of two vectors which are given. For example, let me write those. And vector B okay, these are two vectors, and if the question is that what is the cross product of these two vectors, so in cross product we usually get a third vector when we find the cross product of the vectors. So if we are doing in component form, we will first write vector A into vector B, which is for the component we make a box like this. This is the box, and here we first of all write the components of the vectors, which is I get I cap, j cap and k cap. Okay, these are the components. ये हमारे components है vectors के. अब जैसे हमको पूछा है वेक्टर A इंटू वेक्टर B, तो वेक्टर A में जो कंपोनेंट्स के बिफोर वैल्यूज है उसको हम पुट करते जाते हैं. तो I के साथ 2 है, सो 2, J के साथ -1 है तो -1, K के साथ +3 है तो 3. सिमिलरली इनटू B वेक्टर, सो B की भी हम वैल्यूज उसी टाइप से ले लेंगे. 1, this is +2 and this is 4. Here we have the matrix which we will be solving. So let's solve this.
Let's rewrite this. Vectors A into vector B is equals to बॉक्स के अंदर कंपोनेंट्स आई कैप, जे कैप, के कैप. अब कंपोनेंट्स के साथ साथ उनकी वेक्टर के स्पेसिफिक वैल्यूज. तो फॉर वेक्टर ए आई के सामने 2 है, जे के सामने -1 है, के सामने 3 है. और वेक्टर बी के लिए आई के सामने 1 है, जे के सामने 2 है और के सामने 4 है. ओके, तो ये हमारा बॉक्स है. अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन का फर्दर सॉल्यूशन जो होता है, वेक्टर ए बी इक्वल्स अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज लेना स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैप के लिए जब हम आई कैप के लिए वैल्यूज लेंगे तो हमें एक 2 into 2 का मैट्रिक्स है जो हम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर दिस, और यहाँ जो भी लिखा है उसको वहाँ लिख दो. तो जैसे आई कैप के नीचे ये 2 चीजें लिखी है, तो इसको फॉर एग्जांपल आई हाइड, तो बचा कितना, -1 3 2 एंड 4. इसको हाइड किए हमने तो ये आया. ओके, दिस थिंग. अब फॉर जैसे आई कैप के लिए किए वैसे ही हम जे कैप के लिए भी करेंगे. तो जैसे बीच में साइन यहाँ माइनस था तो इधर माइनस, जे कैप सेम ब्रैकेट काइंड ऑफ. और अब जे कैप के लिए ले रहे हैं तो हम जे कैप की वैल्यूज को गैप कर देंगे. जब जे कैप की वैल्यूज को गैप करेंगे तो हमारे पास इसका 2 into 2 मैट्रिक्स आएगा जो रहेगा 2 3 1 4. हो गया. अब सिमिलरली फॉर के कैप बिटवीन, बीच में प्लस है तो प्लस के कैप. अब के कैप को हाइड करेंगे, के कैप को हाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 2 -1 1 एंड 2. इसको गैप कर दिया. ओके, नाउ विल सॉल्व दिस. अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे -1 3 2 एंड 4. हम -1 को इससे इंटू करेंगे एंड 2 को इससे इंटू करेंगे. लेट मी राइट इट. ओके, तो आई कैप एज इट इज ब्रैकेट -1 into 4 -4, 2 into 3 6 -6, माइनस बीच में माइनस का साइन आता है -6. अब सिमिलरली फॉर दिस माइनस जे कैप ब्रैकेट 2 into 4, 2 into 4 is 8, and similarly 3 into 1 or 1 into 3 which is -3. Now for the last one which is our k cap,
2 into 2, which is 4, 1 into minus 1. For j cap, 2 into 4 minus 1 into minus 1 is minus 1. Now we'll simply solve this. So the answer will be vector A, vector B is equals to minus 4 minus 6 is minus 10. Minus 10 I cap, minus as it is 8 minus 3, 5. So it will be 5 j cap. And then at last for the k cap, हमारी values हो जाएगी 4 minus minus 1, minus into minus plus. So which will be 4 plus 1, which is 5 k cap. So this is our value. This was our cross product in component form. This is all from my side. This is let's conclude it. So myself Arpit Deshmukh again. I'm glad that I got the opportunity to explain this by Siddhivinayak Institute, and thank you for watching my video. Thanks.